अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू स्टेम इंटरनेशनल पब्लिशर्स। दिस इज़ ताहिरा रियाज और हमने सोशल स्टडीज़ क्लास 3 का चैप्टर नंबर 2 व्हाट मेक्स अस यूनिक चैप्टर पढ़ा और अब हम इसकी एक्सरसाइज सॉल्व करने जा रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट जी। फर्स्ट ऑफ ऑल है सर्कल द करेक्ट ऑप्शन एंड द फर्स्ट वन इज Number 1 is the national language of Pakistan is, the correct option is Urdu. And the second one is we learn culture from internet, books, parents and grandparents, television. We learn culture from parents and grandparents. Number 3, horse of cattle show is celebrated in, the correct option is Punjab. Next is what is the national dress of Pakistan? Toga, shalwar kameez, pants and coat, jeans and t-shirt. National dress of Pakistan is shalwar kameez, so option B is the correct option. Next is answer the questions. What is culture? Basically, culture is a way of life of people. Write the names of cultural elements. Cultural elements include foods, music, clothing, language, holidays and festivals. Write the names of any 4 languages spoken in Pakistan. Balochi, Pashto, Urdu, Sindhi, Punjabi. What do you mean by cultural symbols? Basically, cultural symbols are those that represent our country and its culture. Just like dress, national language, famous landmarks. So these all are cultural symbols. Why should we respect other cultures? Because respecting these differences make us better citizens. So that's why we should respect others' cultures. Next is filling the blanks with the correct word from the box. Dash helps us to understand who we are. Culture. Basically, culture helps us understand who we are. Dash is an example of cultural game. Ludo. Ludo is an example of cultural game. Dash clothing reflects our culture. Traditional clothing, definitely. So the next is dash bring people together. Festivals. Festivals bring people together. Cultural dash remind us of our shared identity as Pakistanis. Cultural symbols remind us of our shared identity as Pakistanis. Next, match column A to column B. Cultural dress to shalwar kameez. National language Urdu. Famous landmark Minar-e-Pakistan. Traditional art Ajrak. Independence Day holiday. जी तो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का एक्सरसाइज का सॉल्यूशन और इस लेसन में हमने पढ़ा कि किस तरह से कल्चर हमें रिप्रेजेंट करता है, हमारी कंट्री को रिप्रेजेंट करता है और किस तरह से हमें दूसरों से मुख्तलिफ बनाता है और हमें क्यों और कैसे दूसरे कल्चर्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए और उनको भी वैल्यू देनी चाहिए। तो डियर स्टूडेंट्स, आप भी इस एक्सरसाइज को खुद से अपनी बुक्स पर सॉल्व करें और जिस चीज़ में आपको मुश्किल आ रही है उसके बारे में आप अपने टीचर से हेल्प लें। तो मुझे दीजिए इजाज़त, नेक्स्ट वीडियो तक, अल्लाह हाफिज़।